coaching and teaching and start the train to our athletes from the grassroots in the proper manner, in the proper way, in the proper path, in step by step, and in the right direction, according the teaching stages. This is very easy to train, to teach our athlete this event. Because this is the event we perform well in the Olympic too. Our one legend, Mr. Randhawa, finished 5th in the Tokyo Olympic. But unfortunately, we just miss and have the gap to perform in this event at the Olympic level, because we are justified about this event. We just select the rejected persons. Those are unfit, those are not at the par level, at the high level in the sprinting, and have the good leg and have the good height, lower legs or longs, we used as a hurdler. But keep in mind, the hurdles are the separate characteristics, separate abilities, separate type of athletes, separate type of fitness, etc., etc. So we just choose the perfect and correct athlete for this event, and we just start from the zero level, step by step. 100% we increase and improve in the technique. Then we just focus our other motor abilities, and we can perform at the international level. 100% we get the medal in this event too. जैसा कि अभी हेडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ये वो इवेंट है जिसमें हमारे एक लेजेंड, एक एथलीट थे रंधावा साहब, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 5th फिनिश किया, वेरी क्लोज ऑन द मेडल। और इस इवेंट में आई थिंक दैट टाइम ही क्लॉक 14.07 सेकेंड, लगभग 14.07 सेकेंड टाइम निकाला था उन्होंने उस टाइम टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन इसके बाद हमारी ये परफॉर्मेंस या फाइनलिस्ट कोई नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि हमारा इस इवेंट के साथ थोड़ा सा राइट वे में काम ना करना। जो स्प्रिंट में फेल हो जाते थे, जो स्प्रिंट इवेंट में सक्सेस नहीं होते थे और उनकी हाइट अच्छी होती थी, उनका लोअर लेग अच्छा तो हम हेडल्स कराते थे। या हेडल्स वो इवेंट है जिसमें कि इजीली प्लेस आ जाती है, इजीली हम पोजीशन ले सकते हैं। वो लोग हेडल्स करते थे, वो परफॉर्म करते थे। ये सेपरेट गुण, सेपरेट विशेषताएं रखने वाला इवेंट है। अगर हम ग्रास रूट से प्रॉपर वे में इस इवेंट के लिए अगर हम चुने अपने एथलीट को, तो यकीनन 100% इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म आज भी कर सकते हैं। ये वो इवेंट है जो बहुत टेक्निकल है। इसको अगर हम देखें तो एक नजर में हमें बड़ा कठिन नजर आता है, बहुत टैक्टिकल है, कई मोटर एबिलिटीज का एक साथ मिश्रण है। लेकिन अगर हम ग्रास रूट पे स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग स्टेजेस के हम इम्प्रूव कराएं एथलीट को, तो वो टेक्निकल बड़ा साउंड हो जाएगा और हम परफॉर्म कर सकते हैं। और उस वक्त कोचिंग बड़ा इजी हो जाता है, स्पेशली टीचिंग पार्ट एथलीट को टेक्निक को डेवलप करने के लिए बड़ा इजी होता है। तो दिस आर सम पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड। सेकंड इज
ये historical, if we would just talk about the history, the modern Olympic in 19s, that time a person from the USA, and his name was, I think, Elvin. He performed in two events, 110 and 200-meter hurdles, and he used the flat technique. He ran the flat and jumped the flat over the hurdles, but he used the three-stride pattern at that time also. After that, just step by step and year by year, our technique just increasing, and nowadays we use some other biomechanical principles. With the help of biomechanical research, just regular, we are going to increase the techniques for this event. There are, this is the picture. There are three events according the distance in the hurdles. 100-meter hurdles for women. I'm just talking, not talking about the junior and some sub-junior boys. I'm just talking about the Olympic events. So 100-meter hurdles for women, 110-meter hurdles for men, 400-meter for both men and women. The distance is same, but there are difference in the height. The distance in the height. Yeah. 2 or 3 points you should keep in your mind as a coach. We should know and understand about the competition. Each hurdle should be placed on the track in such a manner, in such a way that the feet of the hurdle are on the side of approach from the starting line, so that the hurdle maybe fail in the running direction. The leg of the hurdles should be in the approach side. So if the athlete touch his or her leg, so hurdle fell in the other direction. Otherwise, it is very difficult. The athlete will be fell down and he will be injured. So always the leg of the hurdle should be in the approach side, from the starting line side. ये इसका पहला एक, हमें एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, अगर हमने हैडल्स पहले नहीं किया है और नहीं जानते, देखें कि जब भी हैडल फिक्स किया जाएगा, जब भी ये बाधा रखी जाएगी, तो इसकी जो टांगे हैं, इसकी जो लेग्स है, वो हमारी अप्रोच साइड, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं उस साइड रहेंगी, जिससे हैडल अगर गिरेगा तो इजिली रनिंग डायरेक्शन यानी फिनिश लाइन की तरफ गिर सकता है। अगर इसकी लेग उल्टी हो और फिर कोई एथलीट टकरा जाए तो एथलीट गिरेगा और दूसरे लेन्स में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये रूल्स कि जब भी हैडल रखा जाएगा, ट्रेनिंग में हो या कंपटीशन में हो, इसी प्रकार से रखा जाएगा। The second is height adjustable system in the hurdles. Must be sliding the weight in the legs also, feet also. यानी ये एडजस्टेबल होगा हाइट के हिसाब से भी हैडल, और जो इसकी लेग होती है उसमें भी वेट डालते हैं, वो भी एडजस्टेबल होगा। ये रूल्स है कि उस तरह का ही हैडल तैयार किया जाएगा। Hurdle is just touching and over turning the hurdles is allowed. हैडल को टच कर देता है, एथलीट जा रहा है रनिंग करते हुए, हाथ लग गया, उसका टच हो गया, कोई बात नहीं, वो कोई ऐसी नहीं है कि नहीं टच कर सकते, या हम क्रॉस करते हुए हाथ लग जाए, लग सकता है। Disqualify 3 or 2 points I will just want to discuss. If one athlete does not clear the hurdles, अगर हैडल को क्लियर नहीं किया और साइड से चले गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। So it is must the athlete should be clear the hurdle. His or her foot and leg at the moment of clearance decide the hurdles. On other side below the horizontal plane at the top is the top of any hurdles. When we cross this hurdle,
we should not be, the real leg should not be, for example, this is the hurdle. So our athlete just cross this. His leg should not be in the below in this line. For example, his trail leg just go from side, but it should not be below this line. It should be across the over the line. It is the must. यानी जब एथलीट क्रॉस करेगा तो हेडल को ऊपर से क्रॉस करेगा. अगर उसके ट्रेल लेग या बॉडी का आधा पार्ट जो है ये लाइन बन रही है इसके नीचे से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट जो लेन में हेडल होता है वहां से साइड से क्रॉस कर सकते हैं या 400 में करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अदर इज द ओपिनियन ऑफ द रेफरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द रेफरी फील दैट ही डेलिब्रेटेड knocks down the hurdle, he can take the decision for the disqualification. It depends to the referee. तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रेफरी पे डिपेंड करता है कि वो देखेगा कि इसने हैंडल कोई एडवांटेज लेने के लिए गिराया, किस तरह से गिराया, या किसी को डिस्टर्बिंग के लिए गिराया. इट्स डिपेंड द सिचुएशन. तो रेफरी भी ये डिसीजन ले सकता है कि वो इसको डिस्क्वालीफाई कर दे. No. This is the most important. The height of the hurdles. It is the most important. There are two type of sprint hurdles in our athletics. The one is 110 meter for men and 400 meter for men. 110 meter for men, keep in mind, we should not decrease or increase the distance from the 110 meter hurdles. पहला बड़ा अहम बिंदु आपको जो रखना है कि जो ये 110 मीटर बाधा दौड़ है इसमें हम ना कम कर सकते ना बढ़ा सकते. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर ऑफिशियली और रिकॉग्नाइज डिस्ट्रिक्ट मीट कर रहे हैं और उसमें हम अगर ये इवेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 110 मीटर ही होगा. ओलंपिक में भी यही सेम डिस्टेंस रहेगा. ये ना कम किया जा सकता है न बढ़ाया जाता है. वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर हर्डल्स एंड दिस इज द स्प्रिंट, रियल स्प्रिंट हर्डल्स इवेंट. कीप इन माइंड. द सेकेंड इज द हाइट ऑफ द हर्डल. 1.067 meter. This is also the fix. It's the rules that at the district level or Olympic level, the distance should be the same in the man group. We cannot change, we cannot decrease, we cannot increase. It should be 1.067 meter. And these are the measurements are the very important at the for the examination point of view. Keep in mind, maybe ask what is the distance of the sprint hurdles, what is the distance of the men hurdles, what is the difference of distance of the high hurdle. It should be 110, it should be 115, it should be 120, it should be 105. There will be the choice. So the questions maybe come from in the your examination from the header, and also in the paper ask that what is the height of the high hurdles, what is the height of the Olympic hurdles, sprint hurdles or high hurdle. The 110 meter high hurdle is the same, sprint hurdle is the same. Maybe sprint hurdle, maybe high hurdle, maybe 110 meter hurdle, maybe men sprint hurdle. All the names are the same for the 110 meter hurdles we use in our hurdle event. So the height always should be fixed 1.067 meter. The same distance, the third is distance from start line to the first hurdle. There is a rules that not more than 13.72 and not less than 13.72. It is the fix that 13.72 meter should be from the start line to the first hurdle. There is a distance. Fix the first hurdle from the start line after the 13.72 meter. So this is the distance from start to the first line. शुरुआत जहां से की जाएगी रेस को, वहां से लेके
पहले हैडल तक की दूरी 13.72 सेंटीमीटर होती है. Distance between the hurdle 9.14 meter for men, and it should be also fixed. We cannot change. This is the rules. And the last hurdle to the finish line only left 14.04 meter. So there are 5 figures. One is distance figure, 110 meter hurdles. The second is the height of the hurdle of the 110 meter, and it is 1.067 meter. The third is the distance from start line to the first hurdle, and this is 13.72 meter. The fourth is between the hurdle. What is the should be the distance between two hurdles, and it is 9.14 meter. And the last but not least is the last hurdle to the finish line. The distance is 14.02 meter. देखिए ये 5 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखना है, जिसपे परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं. पहला, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 110 मीटर बाधा में, वो 110 है. ये भी पूछा जा सकता है कि मेन स्प्रिंट हैडल्स का डिस्टेंस क्या है, तब भी उसका मतलब यही होगा कि 110 मीटर बाधा. ये भी पूछा जा सकता है कि हैडल में हाई हैडल की का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो भी 110. तो इसको हाई हैडल भी कहेंगे, इसको स्प्रिंट मैन हैडल भी कहेंगे, इसको 110 मीटर हैडल भी कह सकते हैं. तो किसी तरह भी पूछा जा सकता है. दूसरे जो अनिवार्य और बड़ी अहम चीज है वो है हाइट, उसकी ऊंचाई. वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट मीट हो या ओलंपिक सेम रहेगी, 1.067 मीटर. तीसरा होता है कि स्टार्ट से पहली लाइन की दूरी, ये फिक्स है 13.72. चौथा है दो हैडल के बीच की दूरी, ये फिक्स है 9.14 मीटर. और लास्ट है 14.02 लास्ट हैडल टू फिनिश लाइन. ये मैं दो बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, और यही आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी पूछा जा सकता है. द सेकंड इज 400 मीटर हैडल्स. सेम डिस्टेंस इज 400 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज सेम फॉर मेन एंड वीमेन, दोनों में एक है. एंड द सेकंड इज द हाइट. हाइट इज 0.914 meter. 914 meter. The third is distance between two hurdle. Start line to the first hurdle is 45 meter. 45 meter. And distance between the two hurdle is 35 meter. And the last hurdle to the finish, the distance is 40 meter. So these distance and the measurement of the 400 मीटर लो हैडल. 400 मीटर मेन ग्रुप की बाधा दौड़ के लिए 400 मीटर डिस्टेंस होता है. 0.914 मीटर इसकी हाइट होती है. पहला हैडल स्टार्ट लाइन से 45 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है. दूसरा हैडल और तीसरे हैडल, तीसरे और चौथे और पांचवें और छठे और सातवें से आठवें से नवे और नवे से 10वें में, यानी कि पहले हैडल से लेके 5 से लेके 10वें हैडल के बीच में जो गैप होते हैं, तो उन दो हैडल के बीच की दूरी 35 मीटर होती है. और लास्ट हैडल से फिनिश लाइन 40 मीटर की दूरी होती है. ये है मेन का. सेम ये विमेन का. विमेन ग्रुप में 100 मीटर होता है 110 की जगह. दिस इज द 10 मीटर डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड विमेन हैडल. एंड हाइट इज 0.840 मीटर. And sometime you find in the book 0.838 meter. It is also right, 0.838, but we cannot measure in the simple tape. So it is the round figure, 0.840 meter. The third is start to the first hurdle distance is 13 meter. Between the hurdle distance is 8.5 meter, and last hurdle to the finish line of the 100 meter hurdle distance is 10.5 meter. So these are the distances. And below in the 400 meter women, 0.762 meter is height. Same 45, 35, same as the men. The distance should be remain same in the women and men from start line to the first hurdle, between the hurdle and last hurdle. But the difference in the 110 meter and 100 meter is not the same. It should always be
separate. In women, the height is of the hurdle is only 0.840 meter. The distance is 13. In men, 13.72. Distance between the hurdle women 8.5 meter. In the men, 9.14 meter. And the finish line, it is the 10.5. So these are the measurement and the distances of the hurdles. Now, we can divide in the 5 part of the technique. The first is start phase. The second is approach to the first hurdle. The third is hurdle crossing. The fourth is running between two hurdles. And last hurdle to the finish. These are the phases of the hurdles. And now we are just talking. First is in your course also the 100 meter sprint hurdles. So this is also we are already discussed in the sprint class. Same as on your marks, same as the set, and same go on the gun. The commands always be remain same. There is no different. And approximately technique is also the same, but a little difference. Difference is only that our athlete, our hurdler, how many step, how many stride he and she will take from start to the from start to the first hurdle. Because there are a technique we will talk in later. How many type of hurdles, stride we can use, and why the difference in the stride. Why not use every athlete the same from start line to the first hurdle? We will just take the later, but the on your marks position is the same. Maybe some complicated and some uncomfortable, because depend to the stride length of the athlete. So it should be little difference. The other is from the go side. When we give the command of go, in the sprint, the athlete just after the get the go command, he and she try to raise his or her upper body, upper torso is gradually run down to the approximately up